शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मात्मन् वदशुचत तथ कामयत समात्मना वर्तेयेति आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै दशमगुं भूतः प्रत्यश्चिनोत् स दशभूतो भवत् दशभूतो हवैनामैषः तं वा एतं दशभूतगुं सन्तम् दशभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै सप्तमगुं भूतः प्रत्यश्चिनोत् स सप्तभूतो भवत् सप्तभूतो हवैनामैषः तं वा एतं सप्तभूतगुं सन्तम् सप्तभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै षष्ठगुं भूतः प्रत्यश्चिनोत् स षड्भूतो भवत् षड्भूतो हवैनामैषः तं वा एतं षड्भूतगुं सन्तम् षड्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै पञ्चमगुं भूतः प्रत्यश्चिनोत् स पञ्चभूतो भवत् पञ्चभूतो हवैनामैषः तं वा एतं पञ्चभूतगुं सन्तम् पञ्चभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै चतुर्थगुं भूतः प्रत्यश्चिनोत् स चतुर्भूतो भवत् चतुर्भूतो हवैनामैषः तं वा एतं चतुर्भूतगुं सन्तम् चतुर्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः तमब्रवीत् तं वै वेनेतिष्ठगुं भूतः प्रत्यश्रौषि त्वयैनानाख्यातार इति तस्मान्नुहैनागुंश्चतुर्भूतार इत्याचक्षते तस्माच्चुश्रूषु पुत्रानागुं हृत्यतमः नेदिष्टो हृत्यतमः नेदिष्टो ब्रह्मणो भवति य एवं वेद आत्मने नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वसंक्षरपदप्रसन्मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हन्निशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। And Swami was talking to these little children from primary school, and Swami narrated a story. Swami said,
There was a big banyan tree in a dense forest, and on the topmost branch of the tree was perched a little bird which was singing away to glory happily. And then what happens? There is a huge storm, and under the impact of the storm, the entire forest starts shaking, and this tree also starts trembling. And soon, the branch on which the bird is seated that comes down crashing to the ground. Then Swami asked the student, "What happened to the bird which was there? What happened?" When every student was glued to Bhagwan with bated breath, like all of us now, isn't it? Swami said, "Nothing happened to the bird. Nothing happened to the bird." Why? The bird just shook its two wings, took on its wings, and flew away to the skies of safety and security. Then Swami added, if the bird had depended upon the branch for its support, the bird would come crashing down to the ground. But the bird depended on its two wings. And similarly, Swami said, if you depend upon the world for your support, your life would just come crashing down someday or the other. On the other hand, if you depend upon the two wings, what are the two wings? Swami said, faith and self-confidence. That is when you can soar high in your journey with Bhagwan. So faith and self-confidence are the two wings of the same bird, isn't it? So after all, faith is believe in God who is outside of us, and self-confidence is believing in the God who is inside us, our own innate divinity. And this is the self-confidence that Bhagwan wants us to develop from faith. See, Chamatkar should lead to all these things. Only then we will be able to travel in the next car of samskar. See, speaking about self-confidence, once a student who liked the prayer of Saint Francis of Assisi, he narrates this prayer in the Divine Presence, and he says, "O God, make me an instrument of thy peace." This is how the prayer goes, isn't it? Then Swami is happy with this, and the boy takes it to heart, and that becomes his mantra, and every day he's praying, "Swami, make me an instrument of thy peace." And a year later, when the same student is blessed to speak in the Divine Presence, and he recites the same prayer, and Swami calls him and says, "Who are you to tell me, make me tea, make me coffee, make me an instrument of, thy peace?" Swami says, you must learn to pray. You must learn to plead, "Swami, may I be an instrument of thy peace?" This is how you must pray. So this modified version becomes this boy's prayer. And a couple of months later, he is again asked to speak in the Divine Presence. And then he says, "May I be an instrument of thy peace, Swami?" Then Swami calls him and says, "How long you will go on pleading like this? May I, may I, may I? When will you learn to say, I am an instrument of thy peace?" See, this is the self-confidence that Bhagwan wants us to develop in this journey. तनया सिद्धि विनायक पार्वती तनया सिद्धि विनायक पार्वती तनया सिद्धि विनायक पार्वती तनया सिद्धि विनायक मंगलदायक
निरञ्जन पाशाङ्कुशधर शम्भो नन्दन पाशाङ्कुशधर शम्भो नन्दन मङ्गलदायक पार्वती तनया सिद्धिविनायक मंगलदायक देवा सिन्दूरवदना प्रथम वन्दना कनक निरञ्जन पाशाङ्कुशधर शम्भो नन्दन मङ्गलदायक जय गणेश जय गणेश पार्वती तनया सिद्धिविनायक साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो गुरु चरण कमल ध्यान 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 करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो केशव माधव भजन करो केशव माधव भजन करो केशव माधव भजन करो केशव माधव भजन करो सद्गुरु साई सेवा करो सद्गुरु साई सेवा करो श्री सद्गुरु साई सेवा करो सद्गुरु साई सेवा करो सा
स्मरण करो, साई साई स्मरण करो, गुरु चरण कमल ध्यान करो, चरण कमल ध्यान करो, साई साई स्मरण करो, साई साई स्मरण करो, केशव माधव भजन करो, केशव माधव भजन करो, सद्गुरु साई सेवा करो, सद्गुरु साई सेवा करो, श्री सद्गुरु साई सेवा करो, सद्गुरु साई सेवा करो, साई साई स्मरण करो। गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद हरि गोविंद, सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद, पुराण पुरुष गोविंद हरि पुण्य श्लोक गोविंद, पुराण पुरुष गोविंद हरि पुण्य श्लोक गोविंद, भक्त वत्सल गोविंद हरि भागवत प्रिय गोविंद, भक्त वत्सल गोविंद हरि भागवत प्रिय गोविंद, कृष्ण राम गोविंद हरि राम कृष्ण गोविंद, कृष्ण राम गोविंद हरि राम कृष्ण गोविंद, राम राम गोविंद हरि साई राम गोविंद, राम राम गोविंद हरि साई राम गोविंद, सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद, पुराण पुरुष गोविंद हरि पुण्य श्लोक गोविंद, भक्त वत्सल गोविंद हरि भागवत प्रिय गोविंद, कृष्ण राम गोविंद हरि राम कृष्ण गोविंद, राम राम गोविंद हरि साई राम गोविंद, राम राम गोविंद हरि साई राम गोविंद, सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद हरि गोविंद, वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविंद, वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविंद, वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविंद, वनमाली राधारमण गिरिधारी गोविंद, नीलमेघ सुंदर नारायण गोविंद, नीलमेघ सुंदर नारायण
గోవింద शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिव शिव शंकर हर परमेश्वर साईश्वराय नमः 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 हरि ओम नमः शिवाय शिव शिव शंकर हर परमेश्वर साईश्वराय नमः 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 हरि ओम नमः शिवाय मधुर मधुर मुरली घनश्यामा मधुर मधुर मुरली घनश्यामा मधुराधिपते राधे श्यामा सूरदास प्रभु हे गिरिधारी मीरा के प्रभु उदय विहारी मीरा के प्रभु उदय विहारी सूरदास प्रभु हे गिरिधारी सूरदास प्रभु हे गिरिधारी मीरा के प्रभु माई मीरा के प्रभु उदय विहारी मधुर मधुर मुरली घनश्यामा ప్రతి మానవుని యందు కూడాను ఈ విధమైనటువంటి యొక్క కష్టములు నష్టములు సుఖములు దుఃఖములు ఆవిర్భవిస్తున్నాయంటే ఇవన్నీ కూడాను మనసు నుండి ఆవిర్భవించినటువంటివి. Man suffers all problems, worries, anxieties, troubles and obstacles which are more or less ఈనాటి psychological. మానవుడు అనుభవించేటువంటి సుఖ దుఃఖములు, ఆశించేటువంటి యొక్క రాగద్వేషములు,
సేవించేటువంటి యొక్క విషయ వాసనలు మూడు కూడాను మనసు ద్వారా ఆవిర్భవించినటువంటివి. In fact, mind is the center of origin for the pain and pleasure, attachment, hatred, and all the sensual pleasure that man wants to మనస్సు experience. ద్వైత భావములో కూడటం చేతనే ఇవన్నీ కూడాను మనకు కనిపిస్తున్నవి. It is the dual mind that is responsible for all. మనసు ఏకాత్మ భావం పెంచుకున్నప్పుడే ఇందులో ఏమాత్రం కూడాను విపరీతమైనటువంటి భావాలు కలగవు. When once the mind is non-dual, there will be no perversions or aberrations. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని ఆశిస్తున్నాడంటే దుఃఖం వల్ల మనకు కలిగేటువంటి నష్టము కంటే ఆదాయమే ఎక్కువగా ఉన్నది. In fact, if we investigate clearly the twin experiences of pain and pleasure, in fact we derive ప్రాచీన more benefit పురుషులు out of pain. ప్రాచీన చరిత్రాత్మకులు ఈ దుఃఖమునే ఆశించారు కానీ సుఖాన్ని ఆశించలేదు. In earlier days, people invited pain. సుఖము నుండి లభించేటువంటి యొక్క ఆనందం కంటే దుఃఖము నుంచి వచ్చేటువంటి యొక్క ఆనందమే శాశ్వతమైన ఆనందము. The bliss that you attain towards the culmination of sadness is permanent when compared to that of happiness. మనం దుఃఖాన్ని ఏమాత్రము విమర్శించరాదు. We should not criticize misery. ఆనందాన్ని మనం స్వాగతం చేయరాదు. We cannot merely invite happiness. సుఖము కంటే ఆనందమే మనకు అమితమైనటువంటి మిత్రుడు. And in fact, bliss is of more advantage than happiness. కనుక ఇటు దుఃఖమైనటువంటి పరమ మిత్రుణ్ణి మనము నిరంతరం కూడా ఆశిస్తూ ఉండాలి. We should always invite the troubles now and then. మహాభారతం నందు కుంతీదేవి వచ్చి కృష్ణుని పాదములపైన పడినప్పుడు అమ్మా నీకేం కావాలి అని ప్రశ్నించాడు. In that great epic Mahabharata, when Kunti fell at the feet of Krishna, Krishna asked her, "What is it that you want?" కృష్ణ నాకు నిరంతరము దుఃఖమునే అనుగ్రహించు అనింది. Krishna, please bless me with all the troubles and problems in this life. ఈ దుఃఖ సమయం నందే నిన్ను అమితంగా ప్రేమించాను, అమితంగా ఆరాధించాను, అమితంగా పూజించాను. It's only in times of difficulties I loved you more and more. I worshipped you, I extolled you, I adored you. దుఃఖము లేని సమయం లోపలను పాండురాణిగా ఉండినంత వరకు నిన్ను ఏమాత్రము నేను స్మరించలేదు. In times of happiness, away from misery, I never thought of you. ఏనాడు నా కుమారుడు అరణ్యవాసం చేసి కన్న కష్టములకు గురి అయినారో ఆనాటి నుండి నీ చింతను నేను అభివృద్ధి గావించుకుంటూ వచ్చాను. That day my son started spending time in the forest, I started worshipping you more and more. కనుక కృష్ణ నాకు దుఃఖంనే అనుగ్రహించమని ప్రార్థించింది. So Lord Krishna, please bless me with all the difficulties. ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई